Hello students, welcome to Math Sambalpuri Pathshala. Now we will discuss about closed graph theorem. So before going to discuss about closed graph theorem, we should discuss closed linear transformation and graph of linear transformation. So what is closed linear transformation? That let x and y are non-linear spaces and M is a subspace of X, then a linear transformation T is mapping from M to Y is said to be closed if Xn converges to X and Txn converges to Y. Then X belongs to M and Y equals to Tx. Similarly, what is graph of linear transformation? Let X and Y be non-linear space and T is mapping from X to Y be linear transformation. देन द सेट जी ऑफ टी ओके ग्राफ ऑफ टी को हम डिफाइन करेंगे जी ऑफ टी करके सो जी ऑफ टी इक्वल्स टू एक्स कॉमा टी ऑफ एक्स सो दैट एक्स बिलोंग्स टू एक्स इज कॉल्ड graph of t. Clearly it is subset of x cross y. So this is your x comma tx is nothing but this is order pair. Okay, so g of t is what? G of t equals to x comma tx, solve that x belongs to m. Okay, ये ये है इसका फॉर्मूला. So if x and y are non-linear space, then x cross y is also a non-linear space. And for product space, norm can be defined as x comma y order pair norm 1 equals to norm x plus norm y, and x comma y norm 2 equals to maximum of x norm of x comma y, and x comma y का norm 3 equals to क्या नॉर्म ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ एक्स का स्क्वायर का स्क्वायर रूट. ओके, सो आप लोग को समझ में आ गया ये what is closed linear transformation and graph of linear transformation. So now we will discuss about closed graph theorem. So let x and y be Banach space and t is mapping from x to y be a linear transformation. Okay, then t is continuous or bounded if the graph of t is if and only if the graph of t is closed. So पहले हम कंटिन्यूस लेके चलेंगे. ओके, देन ग्राफ टी को क्लोज प्रूव करेंगे, फिर हम कॉन्वर्स में ग्राफ टी को क्लोज लेके चल के टी को कंटिन्यूस और बाउंडेड प्रूव करेंगे. सो सी लेट टी इज एक्स टू वाई इज कंटिन्यूस, that is your bounded also, that is xn converges to x, which implies txn converges to tx in y. So we have to prove that g of t, that is your x comma tx, is closed. So let x comma y is the limit point of gt. ओके, अगर ये लिमिट पॉइंट अगर जी ऑफ टी में कंटेंट कर गया तो ये जी ऑफ टी इज क्लोज होगा, बिकॉज क्लोज सेट क्या कहता है? क्लोज सेट अपने हर एक लिमिट पॉइंट को कंटेंट करता है. सो देयर एग्जिस्ट ए सीक्वेंस एक्स एन कॉमा टी एक्स एन इन जी टी सो दैट एक्स एन कॉमा टी एक्स एन कन्वर्जेस टू एक्स कॉमा वाई, which implies xn comma txn converges to x comma y, which implies xn comma txn minus xy converges to 0. T implies xn comma txn minus xy का norm equals to 0. Then xn minus x comma txn minus y tends to 0, which implies xn minus x का norm plus txn minus y का norm tend to y, which implies xn minus x tending to 0 and txn minus y tending to 0, which implies xn converges to x and tx converges to y. Okay, txn converges to tx and tx converges to y. Okay, so but xn converges to x, this implies txn converges to tx अभी हमने बोला. So which implies y equals to tx, hence limit point of xy equals to x comma tx. But x comma tx belongs to gt, which implies x comma y also belongs to gt, because x comma y equals to x comma tx. So gt contains all its limit point. अब मैंने बोला था अगर gt all of its limit point content करेगा तो g of t क्लोज्ड होगा. सो फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया. देन कन्वर्सली हम देखेंगे
लेट जी टी बी क्लोज्ड लेके चलेंगे और टी को बाउंडेड और कॉन्टिन्यूस हम प्रूव करेंगे। सो जी टी कैसे हम डिफाइन कर रहे हैं, एक्स कॉमा टी एक्स और दैट एक्स बिलोंग्स टू एक्स। डी इम्प्लाई जी टी सबसेट ऑफ एक्स क्रॉस वाई बिकॉज एक्स कॉमा टी एक्स इज ऑर्डर पेयर है। ओके, सो ऑर्डर पेयर कहाँ पर आता है, जब दोनों सेट को हम प्रोडक्ट करते हैं तो और उसका एलिमेंट ऑर्डर पेयर में आता है। ओके, सो टू प्रूव जी टी इज ए सबस्पेस लेट एक्स वन कॉमा टी एक्स वन ओके एंड एक्स टू कॉमा टी एक्स टू बिलोंग्स टू जी टी। ओके, सो अब हम इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे, लेट अल्फा बीटा बिलोंग्स टू एफ और इसको अल्फा इंटू एक्स वन कॉमा टी एक्स वन प्लस बीटा होल इंटू एक्स टू कॉमा टी एक्स टू इज इक्वल्स टू अल्फा एक्स वन प्लस अल्फा टी एक्स वन प्लस बीटा एक्स टू comma beta tx2 is equals to alpha x1 plus beta x2 comma alpha tx1 plus beta tx2 is equals to alpha x1 plus beta x2 comma t of alpha x1 plus beta x2 belongs to gt. Therefore gt is closed subspace of x cross y. Okay, ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन बिलोंग्स टू जीटी हो गया तो जीटी क्या होगा, क्लोज सबस्पेस होगा। दी इम्प्लाई जीटी इज कॉम्प्लीट Banach for Banach space because GT ये complete और Banach space क्यों हुआ, because X and Y Banach space है। अगर X and Y Banach space है तो उनका प्रोडक्ट भी Banach space होगा और G of T तो उनका क्लोज सबसेट है तो Banach space का सबस्पेस भी Banach space होता है। So G of T is also Banach space. The implied G of T is Banach space. So define a map T mapping from G of T to X okay by T of X comma Tx equals to X. So let T of x1 comma tx1 is equals to T of x2 comma tx2 which implies x1 equals to x2. We imply x1 comma tx1 equals to x2 comma tx2. The implies t is 1 1. Okay, also for each x belongs to x there exists x comma tx in gt so that t of x comma tx equals to x. The implies t is on 2. Okay, t of x comma tx equals to x. x आ गया, हम लोग यहाँ पर भी लिए हैं। सो यहाँ पर से तो ऑब्वियसली ऑन टू प्रूव ही हो गया है और यहाँ से 1 1 प्रूव हो गया है। फिर हम देखेंगे टी ऑफ अल्फा एक्स वन प्लस बीटा एक्स टू इज इक्वल्स टू टी ऑफ अल्फा एक्स वन प्लस अल्फा प्लस प्लस टी ऑफ अल्फा एक्स वन प्लस टी ऑफ अल्फा एक्स वन प्लस बीटा एक्स टू प्लस बिग टी ऑफ बीटा एक्स टू। ये टी को हम बिग टी बोल रहे हैं और ये को इसको स्मॉल ओके विच इक्वल्स टू स्मॉल टी ऑफ अल्फा एक्स वन प्लस बीटा एक्स टू। ये इजी है, लीनियर कॉम्बिनेशन में ही लिखा है। इस पे आप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का प्रॉपर्टी अप्लाई करके ये आ जाएगा लास्ट में अल्फा टी ओके दैट इज योर अल्फा स्मॉल टी ऑफ एक्स वन कॉमा टी एक्स वन प्लस बीटा स्मॉल टी ऑफ एक्स टू कॉमा टी एक्स टू। This implies T is mapping from GT to X is a linear transformation. Also, T of small t of x comma tx का norm equals to norm of x because small t of x comma tx equals to x. So which implies less than equals to norm of x plus norm of tx less than x comma tx and t of x comma tx less than equals to 1 dot x comma tx का norm. Small t is mapping from g t to x is a bounded continuous linear transformation. ओके बिकॉज ये लेस देन कोई टर्म में आ गया तो वो बाउंडेड होता है, आपको पता है। सो टी इज मैपिंग फ्रॉम जी टी टू एक्स वेयर टी इज 1 1 on 2 and continuous and gt is Banach and also x also Banach space. So t is homeomorphism. Okay, that is your ये कैसे पता चला, अगर t is mapping from g of t to x है ओके एंड जी ऑफ टी भी बानाक एंड एक्स भी बानाक है तो टी आपका हो जाएगा होमियोमॉर्फिज्म। सो टी अगर होमियोमॉर्फिज्म है तो उसका टी इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। पी जी टी टू एक्स था तो टी इनवर्स एक्स टू जी टी हो जाएगा, वो भी कॉन्टिन्यूस। ओके, सो टी इनवर्स को हम क्या लिख सकते हैं, टी एक्स लेस देन इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ एक्स प्लस टी एक्स का नॉर्म और इसको हम लिख सकते हैं ऑर्डर पेयर में एक्स कॉमा टी एक्स का नॉर्म
which implies x, tx को हम लिख सकते हैं t इनवर्स x. ओके, सो tx लेस देन इक्वल्स टू kx. अगर t ऑफ x का नॉन लेस देन kx आ गया तो t इज बाउंडेड. t इज बाउंडेड है तो इम्प्लाइज t इज कंटिन्यूस, व्हिच कंप्लीट्स द प्रूफ. सो अगर किसी को डाउट होगा तो कमेंट करके बता सकते हैं. अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब.